Assalamu alaikum everyone. मैं हूँ सादिया गोंदल and I welcome you all again at the platform of Javed Publishers. आज हम कंटिन्यू करेंगे किड्स इंग्लिश ग्रेड 5 का चैप्टर नंबर 3 जिसका टॉपिक है मोहम्मद अली सतपारा लेट. We will be doing page number 19. Page number 19 किड्स इंग्लिश ग्रेड 5 चैप्टर नंबर 3 मोहम्मद अली सतपारा लेट के आज हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माउंटेनियरिंग. इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 18 लाइन नंबर 4. मैं उसको पढ़ देती हूँ. माउंटेनियरिंग इज ऑल अबाउट ट्रेवल ऑन ग्लेशियर्स, स्नो और आइस टू रीच अ समिट. इट इज ऑल्सो नोन एज माउंटेन क्लाइंबिंग. दूसरा सवाल है हु इज़ मोहम्मद अली सतपारा. इसका आंसर आपको मिलेगा लाइन नंबर 7 पेज नंबर 18. द आंसर इज मोहम्मद अली सतपारा is a versatile mountaineer and a Pakistani hero. He is the only Pakistani who climbed 8 of the world's 14 highest mountains and climbed the first ever winter ascent of the world's 9th highest peak, Nanga Parbat. सवाल नंबर 3 है When did Ali Satpara earn worldwide fame and how? इसका जवाब आपको मिलेगा लाइन नंबर 17 पेज नंबर 18. He earned worldwide fame by summiting Nanga Parbat as one of the 3 team members. He was physically fit, accept any challenge, and determined to accomplish his task. Question number 4. What was his expedition? इसका आंसर आपको मिलेगा लाइन नंबर 23 लाइन नंबर 23 पेज 18. They were on an expedition to climb K2, which is supposed to be the most scariest and dangerous mountain. He wanted to summit K2 without oxygen as a father and son do. Question number 5. Were the rescue teams successful in finding Ali Satpara? इसका आंसर आपको मिलेगा लाइन नंबर 29 पेज नंबर 19. The rescue teams were sent to look for Satpara, but eventually the search was called off and all the 3 climbers were declared dead. Thank you everyone. Keep watching. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ.